All right, welcome guys. So I hope all of you can hear us, and we're just waiting for some more students to come in and join us for this session. And welcome back to Padhai Charcha. As we started this last year also, and we would love to continue this year as well. ओके सो पढ़ाई पे चर्चा एज सच हम लोग पिछले साल भी करते हैं एंड यस great to see so many people joining us. I wish that if you are attempting 2019 JEE, maybe we can make this year much more productive. And if you are going to attempt 2020, then definitely 2019 आपका एक बहुत अच्छा base year बन जाए. That is what we are trying to do at Marathon Go. Okay, guys. So we have been receiving a lot of queries after once JEE mains or in fact JEE advance happened और आज JEE advance का result भी आया है. So अब बहुत सारे बच्चे अगर हम बात करना शुरू करें they are getting confused whether to drop or not. First of all, the first most confusion. So how we are going to run this Padhai Pe Charcha? I'm going to first of all talk about what I think from my perspective, and maybe then we'll open the session where I'll take all your doubts. So people who are writing in the chat window can just wait for 10 minutes before I'll start taking all your doubts. Whatever you write, I'll answer that. पहले मैं 10 minute, let's concentrate on what the topic agenda is, and then maybe we can take that particularly forward. Okay, so coming to the point, there is a confusion whether to drop or not. I have already made a video, so we are not trying to make videos बार बार वही वीडियो बनाते रहे सब्सक्राइबर बेस बनाने के लिए. हम वो काम नहीं करते. जो हमें फॉलो कर रहे हैं they must be knowing that. Definitely you have a good confusion whether to drop or not. So just go and watch that video whether you should drop or not. This will help you in deciding what your target is. General consensus is ड्रॉप से कुछ बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ता है. बहुत सारे बच्चों को लगता है दैट यू विल स्पेंड 1 year or you will waste 1 year. That's not gonna happen. If you are working for your improvement, it doesn't matter whether you waste 1 year or 2 year. We should not call it a waste. It is always an improvement. That is how world sees it, right? So don't worry, nobody is going to ask you something that you have dropped और उसका कहीं आगे चल के इफेक्ट आएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. एवरी एप्लीकेशन दैट यू विल टेक इन द फ्यूचर कि भाई आप कहीं एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं, हर जगह क्राइटेरिया जरूर आता है. वो पूछते हैं दैट व्हाट हैपेंस इन योर गैप पीरियड, बट इफ यू कैन एक्सप्लेन देम दैट आई हैव वर्कड ऑन माय ओन, I wanted to improve myself, that's why I have taken 1 year break. Nobody is going to ask you anything, so don't worry about it. Okay. And yes, if you can work hard this year. So but the biggest criteria that whether you should think of dropping or not is that can you study hard enough, right? So the first criteria of even thinking of a drop is are you ready to take the challenge? Because drop is a very very big challenge. क्यों ड्रॉप में सिर्फ दिक्कत पढ़ाई की नहीं होगी, एक्सटर्नल प्रेशर कि यार पेरेंट्स हमेशा आपको नेगेटिव व्यू से देखेंगे, दोस्त तो देखते ही देखते हैं, रिश्तेदार आएंगे, माँ बाप को सुनाएंगे कि भाई बच्चे को ड्रॉप क्यों करा दिया, इसको तो कॉलेज ज्वाइन करा देना चाहिए था, क्यों 1 साल और बर्बाद कर रहे हैं. सो ये सारी चीजें आती हैं पिक्चर में जब आप ड्रॉप की बात करते हैं. यू विल हैव टू टेक दैट pressure on you, right? That's what I will like to recommend, that if you can handle that pressure, then only think of going for the drop, right? Okay. बहुत सारे लोग अभी भी सवाल जवाब करने में लगे हैं. I'm just requesting just for 5 more minutes. आप अपना टाइम वहां ना वेस्ट करें लिखने में. Just listen to. Next that thing we will take forward in this session is people who have just moved to class 12th. So class 12th के बच्चों का बहुत डाउट है कि सर हमारा 11th बिगड़ गया है, क्या हम IIT JEE निकाल सकते हैं. कई लोग हमें ऑफेंड भी करते हैं हमारी वीडियोस के नीचे लिख लिख के कि सर 11वीं तो है नहीं अच्छी, तो 12वीं कहाँ से हो जाएगी. See, whatever you guys are thinking is actually right, that if you are not good at 11th, how can you do better in class 12th?
ये सोचने के लिए बहुत अच्छा है, बट जो लोग इसको ज्यादा सोचते रहते हैं उनका कोई मदद नहीं कर सकता। सी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी से पहले, कई कई लोग ये भी बोलते हैं सर आई वांट टू डू 11th अगेन, राइट? सो प्लीज डोंट डू दैट थिंग। 11th दोबारा करने से कुछ नहीं सुधरने वाला है। व्हाट आई बिलीव इन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई, 1 year इज मोर देन इनफ। अगर आप एक कंसंट्रेटेड पढ़ाई करते हो तो 4-4 3-3 साल प्रिपेयर करना जरूरी नहीं है। जो हम आजकल बच्चों को 9 से 8 से कोचिंग देने का प्रक्रिया बन गया है बहुत ज्यादा, वो एक बिजनेस मोटिव भी है, प्लस एक उसमें अच्छा मोटिव भी है कि दैट यू आर नॉट टू मच प्रेशराइज्ड। बट हैविंग सेड दैट, if you can devote yourself for one complete year to IIT JEE, this is more than enough। ड्रॉप में भी बच्चा जो निकालता है IIT, वो 1 साल की प्रिपरेशन से निकालता है। बच्चे बोलते हैं 12th वाले की सर हमारा स्कूल भी है, ठीक है। मेरा मानना उल्टा होता है। जब आपके पास टाइम की कमी होती है ना, तो आप उसकी वैल्यू ज्यादा करते हो। जब आपको पता चलता है कि यार आधे से ज्यादा दिन तो मेरा स्कूल ले गया और मेरे पास टाइम नहीं है, तो जब घर पे आते हो ना, तो जो एक प्रेशर होता है पढ़ाई का, वो आपसे हमेशा ज्यादा रिजल्ट निकाल के देगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव। सो डू नॉट जस्ट वरी अबाउट क्लास 11th कि सर क्लास 11th बहुत प्रेशर है और बहुत कुछ हो रखा है। ठीक है यार, सबके साथ होता है, बिलीव मी, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। और हर बच्चा रो रहा है कि जिसका 11th अच्छा भी गया है ना, वो भी रो रहा है कि सर मेरा अच्छा नहीं गया। बहुत सारे लोगों का हो सकता है सही में बहुत ही बेकार गया है, जबकि 90% बच्चों का बहुत बेकार जाता है 11th, बिकॉज एक्सपेक्टेशन नहीं थी, राइट? अब आप इस चीज से सीखें। प्लीज स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम योरसेल्फ। हम 10th में 10 सीजीपी वाले थे, 90% एंड अबव वाले थे, तो हमारी ना अपने आप से बहुत एक हाई एक्सपेक्टेशन थी कि क्या करें कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम आईआईटी निकाल जाएंगे, और वो अब एक्सपेक्टेशन टूट गई है, ठीक है। But believe me, if you can stop expecting anything from you, your results will be tremendous. If you really want to improve or prove yourself or improve on your result, think day by day that how I am improving day by day. Improvement जरूरी नहीं है हर बार मार्क्स से देखी जाए। ये 11वीं में जो बच्चा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर बार सिर्फ उस पैरामीटर पे मत जाओ, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, जिसपे जनरली आज तक जनता जज करती आई है। दिस इज द मिस्टेक दैट यू विल डू। जरूरी नहीं है कि आपका 11th खराब हो तो 12th भी खराब होगा, ठीक है। आप अभी तक पढ़ने वाले नहीं थे तो जरूरी नहीं है आप कभी भी पढ़ने वाले नहीं होगे। आप हमेशा से 10th पढ़ाकू रहे थे तो जरूरी नहीं है आईआईटी हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा लॉजिक होता तो भैया बहुत सारे लोग सिर्फ टॉपर्स ही आईआईटी में सिलेक्ट होते। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट कभी भी जिसका 10th तक जो एवरेज था वो कभी सिलेक्ट नहीं होता, राइट? सो ऐसा कोई रूल नहीं है। सो फॉरगेट अबाउट ऑल दीज रूल्स। थिंक ऑफ, इफ यू कैन जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड, और आपको अपना मोटिवेशन लेवल कभी नहीं गिराना है। देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, राइट? अप एंड डाउन, साइन कर्व, कॉस कर्व, सब चलेगा, राइट? यू जस्ट हैव टू होल्ड इट ऑन, राइट? अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाना है। ये चाहे आप 11th में आए हैं, चाहे 12th में आए हैं, या आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू everywhere। All right, so please, I request everyone, think in a positive way. Stop expecting any rank or anything from you. Your expectation should be only one thing: I need to improve myself. I need to improve not on the final day, और जब मेरे नंबर आ जाएंगे तब मैं बोलूंगा मेरा इंप्रूवमेंट है। One thing is required only: you need to improve daily basis, चाहे 1% improvement हो। If you do 1% improvement cumulatively for 365 days, cumulative का फॉर्मूला लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, you'll be surprised to know that you will improve yourself by 78 times. That's the beauty, right? Okay, so that's what I'm trying to say कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उतरते हो तो आपका लिटरली बहुत फायदा होगा। So first aspect is positive thinking. Second aspect, which you should do for class 11th, class 12th and droppers, अपनी जो गलतियां हैं उसे पहले रिकॉग्नाइज करना सीखो। 11th के जो बच्चे आए हैं अभी, वो एकदम से गलती के मोड में नहीं आएंगे, उन्हें गलती अभी सीखनी पड़ेगी कि गलती कर क्या रहे हैं। 12th वालों को अभी तक समझ में आ चुका होगा गलती क्या है, और ड्रॉपर्स तो खैर समझ ही गए होंगे, राइट? और ड्रॉपर्स जनता मैंने देखा है बहुत जल्दी, ये 12th की जनता भी शॉर्टकट्स में लगे हुए हो यार तुम लोग। अंडरस्टैंड, प्लीज 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 अंडरस्टैंड, देयर इज नो शॉर्टकट।
If somebody is giving you a shortcut, there is no shortcut. Believe me, आप शॉर्टकट के चक्कर में हमेशा फिर शॉर्टकट का रास्ता ढूंढोगे और वो हमेशा शॉर्टकट होता नहीं। इन अ प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन लाइक आईआईटी जेईई जहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन है, डू यू थिंक शॉर्टकट्स आर रियली गोइंग टू वर्क? डू यू रियली थिंक सो? मतलब कम ऑन, बी लॉजिकल नाउ, राइट? बहुत सारे लोग बहुत तरीके से उल्लू बनाते हैं, स्पेशली दी इंस्टीट्यूट्स, बिगर इंस्टीट्यूट, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट उतना बड़ा उल्लू बनाएगा, आपको ये बात याद रखना। और बहुत सारे लोग फिर से जवाब जवाब लिखे जा रहे हैं, 8 मंथ स्टडी प्लान, देयर इज नथिंग कॉल्ड 8 मंथ स्टडी प्लान। पहली बात, डू नॉट फॉल इन ट्रैप ऑफ एनी इंस्टीट्यूट और लेट्स से एनी चैनल। मेरा भी चैनल है तो उसके भी ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। प्लीज थिंक मेच्योरली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, आप सब 11th 12th या ड्रॉपर, आई बिलीव यू आर मेच्योर्ड गाइस, राइट? थिंक मेच्योरली। हम जनरली क्या करते हैं, हमारा मानना है कि यार हम उनसे बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप कर रहे हैं आजकल, सवाल आता है हमारे पास कि सर कोटा जाके पढ़ें क्या, हम कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें? अरे भैया, आपको ये थॉट आता ही क्यों है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सो और इवन पीपल हु आर कमिंग टू 12th, दे थिंक कि सर मुझे इंस्टीट्यूट चेंज कर लेना चाहिए, क्या मेरा इंस्टीट्यूट चेंज करने से इंप्रूवमेंट हो जाएगा? क्यों आप ये क्यों सोचते हो? अखबार में फोटोएं आती हैं बड़ी बढ़िया लिखी हुई कि यार हमारा टॉपर जो है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से है। पहली बात, दैट डज नॉट मीन टॉपर जिस इंस्टीट्यूट से है उस इंस्टीट्यूट से आपकी भी रैंक आ जाएगी। टॉपर का टॉपर आने का रीजन इज नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूट और नॉट इवन जस्ट टीचर्स फॉर दैट मैटर। उसकी खुद की सेल्फ डिटर्मिनेशन कितनी है, उसकी सेल्फ प्रिपरेशन कितनी है, कितना वो मोटिवेटेड वे में पढ़ाई करा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं which you cannot copy. That's the problem. That is why those prestigious ranks पे जो बच्चे आते हैं वो different है, really they are different, not by IQ or by any institute that they have joined, right? But just by the matter that they work hard, right? And they don't waste their time thinking too much about what somebody else is doing, what book should I do, right? So for example, a lot of people keep us asking, sir, what books to do, right? हम लोगों ने एक वीडियो भी बना दिया उसका, फिर भी बच्चे पूछे जा रहे हैं कि कौन सी बुक करनी चाहिए, कौन सी बुक करनी चाहिए। उसमें ऑब्वियस ही बात है, कई बुक्स हमने शायद मेंशन नहीं करी होंगी, तो हमने वहां पर डिस्क्लेमर भी डाला था वीडियो में कि वी कैन नॉट गिव यू एग्जैक्ट बुक्स दैट यू शुड डू। अभी भी मैं बोलता हूं, देयर इज नो बेस्ट बुक और देयर इज नो बैड बुक। अ गुड बुक इज अ गुड बुक व्हेन यू कंप्लीट इट इन टोटलिटी, दैट्स अ गुड बुक फॉर यू। कोई भी बुक पकड़ो, उससे आईआईटी निकल जाएगा, राइट? प्लीज डू नॉट डू दिस एरर कि आपने, जैसे अभी हमें एक मेल मिला जिसमें क्या करा, एक बच्चे ने जो हमने बुक रिकमेंड करी थी उसने वो सारी खरीद के एक बार में रख ली। भैया वो नहीं करना है, प्लीज, वी आर नॉट सेइंग और इवन टेलिंग यू टू डू दैट। आप एक किताब को एक समय करें, उसको पूरा 100% खत्म करने की कोशिश करें, दैट इज द फर्स्ट जॉब, एंड इन दैट प्रोसेस दैट बुक विल बिकम बेस्ट फॉर यू, राइट? सो डिपेंड करो बुक कौन सी खरीदनी है अपने लेवल के हिसाब से, कि इफ यू फील, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको लगता है कि यार मेरी फिजिक्स बहुत वीक है, अभी आई एम नॉट अप टू द लेवल, चाहे आप 11th के हो, चाहे 12th के हो, चाहे ड्रॉपर के हो। सो योर टारगेट शुड बी, इफ यू आर वेरी वीक, जैसे हमने एस एल अरोड़ा बताया, या कोई और भी किताब है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा प्रदीप फॉलो कर रहा है, देयर कैन बी एनी बुक्स, राइट? मैंने सिर्फ लेवलिंग करने के लिए आपको समझाया है। सो आप सबसे पहले वो बुक करोगे, अगर आपको लगता है वो लेवल सर अटेन हो गए, देन यू मे बी शिफ्ट टू एक्सी वर्मा। देन इफ यू अटेन की सर वो भी लेवल हो गया, देन मे बी यू विल डू सम डीसी पांडे, अनुराग मिश्रा, और अगर वो भी लगता है तब आप जाके एरोडो लेवल पे बात करेंगे। सो दिस इज कंप्लीटली ग्रेडियंट। अगर आप इसमें बीच में भी एक को जल्दबाजी में स्किप करने की कोशिश करेंगे, दैट सर माय फ्रेंड इज डूइंग दिस, आई शुड आल्सो डू दिस बिकॉज वो इंस्टीट्यूट में रैंक ले आता है, स्कूल में उसके नंबर आ रहे हैं क्योंकि वो ये किताबें करता है, और मैं भी यही करूंगा तो मेरे भी नंबर बन जाएंगे। भैया फिर तो ऐसा करो ना, टॉपर की वीडियो आ गई है, ठीक है, उसकी वीडियो देखो, जो वो करता है वो करना शुरू कर दो, इंस्टीट्यूट छोड़ दो, कोई भी किताब पढ़ना छोड़ दो, जो वो करता है वो करना शुरू कर दो। क्या रैंक आ जाएगी आपकी? नहीं आएगी। प्लीज अंडरस्टैंड,
for getting a good rank anywhere for that matter, IIT हो, हम आगे चल के IIMS के पेपर देंगे, GMAT की तैयारी करेंगे, किसी की भी चीज या IAS की तैयारी करेंगे, हम किसी भी चीज की तैयारी करें, believe me, only thing required is your determination and your motivation level. Rest everything can work out. 19-20 का फर्क होता है भाई लोग, 19-20. So for example, अगर आपको लगता है that going to an institute, going to a book, going to quota is going to improve you, bullshit. That's bullshit, right? That's not going to happen. So please do not waste your energy or even ask us repeatedly that. Okay? So you might be weak at some topics. चलता है, हर किसी का हर चीज स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होता है, राइट? सो डोंट वरी टू मच अबाउट what is happening with you. Just concentrate on what is going to happen. जो खराब हो चुका है उसको सर पे पहाड़ मत बनाओ. Relieve the pressure. Think of, for example, you have now 300 days left. How you are going to utilize them. That's much more important. That's very important. पिछले 365 दिन कैसे खराब गए, हो गए ना यार, होता है, गलती सबसे होती है. वी आर ह्यूमंस, राइट? वी आर नॉट रोबोट्स और मशीन्स की यार हमेशा ही परफेक्ट काम करेंगे. Think of, you are given now 300 days. How you will maximize those 300 days with your potential. And I believe me, every one single student on this planet has a huge potential. It is just that आप खुद का ही potential नहीं देखते हो. क्यों? 2-3 बड़े सारे रीजन है. एक तो आप लो इन कॉन्फिडेंस होते हो, फिर उस पे से ऊपर से आपको लोग उल्लू बना देते हैं और फिर आप उल्लू बन जाते हैं. प्लीज बी कॉन्फिडेंट so that you do not become a ullu. Alright, so I am opening the window for you guys to ask questions, and I'll try to answer maximum which in my capacity I could do. And yes, we will now start doing Padhai Pe Charcha so that we can motivate you to do better in your examination. Whatever query you have, feel free to write in the window. We have 15 minutes time. Let's see how many questions we can cover. Okay. A lot of students, I think I would have answered them. So for example, so there is a common myth कि सर कोई सब्जेक्ट मुझे बड़ा बोरिंग लगता है, कोई सब्जेक्ट मुझे सर बड़ा टफ लगता है, या पढ़ने का दिल नहीं करता है, या फिर एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ने का दिल करता है और मैं वही करता रहता हूँ, मैं करती रहती हूँ. Understand, when you are trying to compete for an examination like IIT, first of all, it is not a BSc degree program that you are trying, right? आपका टारगेट BSc नहीं है. अगर आपका टारगेट BSc जैसा एग्जाम था तो आप मुझे बोलते हो कि अगर सर फिजिक्स मेरा फोटे है, फिजिक्स मेरे को प्यारा है, फिजिक्स ही मेरी जान है, तब तो समझ में आता है. बट व्हेन यू आर टारगेटिंग टू बी इंजीनियर्स, राइट? इंजीनियर्स का काम क्या होता है? दे आर पैशनेट अबाउट देयर गोल. योर गोल इज टू क्रैक IIT. In cracking IIT, there are 3 subjects: physics, chemistry, maths. It doesn't matter what you like or what you hate. You have to do them. ये बांध दो यहाँ पर गांठ. You have to do them. There is no option. And you would love all of them. And you have to do them strategically. ये नहीं कि एक दिन बैठे और पूरा मैथ्स कर डाला क्योंकि आज सर मैथ्स करने का मन कर रहा था. ये जो मूडी पढ़ाई है, मूडी पढ़ाई से रिजल्ट नहीं आएगा if you are trying for a top spot. Believe me on this. Got it? So do not worry too much. हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो. Everybody has some affection towards a particular subject, right? So for example, मेरा मैथ्स के साथ था. आप लोगों में से बहुत सारों को हो सकता है मैथ्स के साथ हो, कईयों का फिजिक्स के साथ हो, कईयों का केमिस्ट्री के साथ हो. और somebody would say, सर केमिस्ट्री में तो हमें रट्टा मारना पड़ता है सर, वो मुझसे नहीं होता. अरे भैया, अगर केमिस्ट्री में नहीं रट्टा मारना है ना तो आईटी की पढ़ाई आज से ही छोड़ दो. मैं बहुत ऑनेस्ट आंसर बोल रहा हूँ. कई बार लोगों को लगता है कि मैं ना गुस्सा हो गया. मैं गुस्सा नहीं होता हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द ट्रूथ, राइट? वी हैव हर्ड अ लॉट मेनी टाइम्स. लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमें मेंटर कर दो, और हम मेंटरिंग शुरू करते हैं, उसमें बोलते हैं सर केमिस्ट्री का तो मैं रट्टा नहीं मार सकता. अरे तो भाई आईआईटी छोड़ दे. आईआईटी छोड़ दे ना. मेंटरिंग करके क्या करेगा? किसी से पूछ के भी क्या करेगा? इफ इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड. अगर इतनी सी चीज को आप इतना इजीली समझ के आगे एग्जीक्यूट कर दोगे, believe me, life will be very easy and you will enjoy it at the same time. Okay? All right. Self-study versus coaching. See, coaching, I am not saying that I am against coaching institutes. How they treat coaching और आप क्यों coaching join करते हो, मैं उसके against हूँ.
कोचिंग बहुत प्रोपागेंडा करते हैं, वो सही भी है, उनका काम है, वो बिजनेस है उनके लिए, राइट? दे आर नॉट डूइंग इट एनी रॉन्ग। ना वो आपको गलत बोल रहे हैं या रैंक छाप रहे हैं। आप रैंक देख के जा रहे हो, वो गलती इंस्टीट्यूट्स की नहीं है, वो आप बच्चों की गलती है। एक टॉपर, अभी बहुत सारी जगह हमें ना एक्विजिशन झेलना पड़ा कि हमने जैसे मास्टर क्लासेस चलाई, तो बच्चे बोलते हैं कि सर पैसा पैसा चार्ज कर रहे हो। ठीक है, उन्हें ये नहीं दिखता कि हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं उसको बनाने में। मैं सारा दिन बैठ के अब अपनी नौकरी छोड़ के कोर्स बना रहा हूं, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू चार्ज। बट वही बच्चा जब उसकी रैंक आ जाएगी, तब दो इंस्टीट्यूट्स में पैसा देके अपनी फोटो जरूर डाल देगा, तब उसको पैसे पैसे वाली चीज याद नहीं आती। बट अभी एक साल पहले वो हमारे को क्रिटिसाइज जरूर करेगा। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू टेक एनी एक्शन। सो इफ यू आर ज्वाइनिंग समथिंग just for the heck of some photos, don't do that. Otherwise, if you're joining an institute, it is good to go. All right? Always, because they give you structure, they will give you a feel of competition. But किसी ने आपको ये नहीं बोला है कि आप उसे 100% फॉलो करो। Follow what you know is best for you. Utilize the resources that you have according to you. लोग क्या होता है, बहुत बार हमने नोटिस करा है कि अगर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो वो कैसा फील करते हैं कि सर मेरे पास अब तो और कोई ऑप्शन नहीं। वो अपने ऊपर ना सर के ऊपर पहाड़ बना लेते हैं। अरे भैया, ऑप्शंस बहुत हैं, अगर आप यहां से पहले अपने आप को फ्री करो। तो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे साथ भी हुआ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट्स द रीजन आई हैव टू ड्रॉप 1 ईयर। कि यार एक जगह में अटक गया कि यार मुझे एक इंस्टीट्यूट जाता हूं मैं, और मुझे वहां ये चीज बहुत पसंद है पर और चीजें पसंद नहीं है, बट मैं वही करूंगा क्योंकि वो मुझे पसंद है एक सब्जेक्ट की वजह से। नतीजा क्या हुआ? ड्रॉप करना पड़ा। 1 साल लात खा के मुझे अकल आई, राइट? प्लीज डोंट डू दैट ऑन योर पार्ट। People are asking third attempt for JEE mains, complete no, completely no. Okay, sir, I'm a dropper. Please, 1 year. लोग पूछ रहे हैं सर कौन सी किताब करने से 1 साल में रिजल्ट आ जाएगा? डू एनीथिंग, doesn't matter. In fact, you have an option now of master classes for maths also. Do look out for them. Okay, but you can do anything. अगर आप एक हार्ड वर्क कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक हार्ड वर्क कर रहे हो और इमोशनल हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। एक बहुत प्रॉब्लम भी आती है कि हम बहुत बार ना इमोशनल हार्ड वर्क करते हैं कि आज मन करा तो जी जान लगा के 24 में से 12 घंटे पढ़ लिए, कल सर मूड ही नहीं कर रहा तो आज हम नहीं पढ़ेंगे। यार इस तरीके से ना रैंक नहीं आती है, प्रॉब्लम ही, रिजल्ट बहुत दूर हो जाता है इससे। How to revise a topic, that's a good thing. In fact, we have talked about this a lot. A lot of students, especially who are coming in class 11th and class 12th, और droppers को भी ये feel होगा अब, revision is the main aspect which is going to improve your rank at IIT JEE. और जब तक आपके पास ऐसा कोई solid plan नहीं है, you are messed up, right? So please, I have already taught you, in fact, many of my students in the earlier videos also, start mind mapping technology. What is mind mapping technology? ये मेरी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है शॉर्टकट्स को अपना शॉर्टकट बना के प्रमोट करते हैं। यार शॉर्टकट सारे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, सारी टेक्निक्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। मैं अपना नाम नहीं लगाना चाहता हूँ उनके यहाँ पर, अपना ऊपर लेबल नहीं लगा रहा। So what is mind mapping technology? It's a scientific process which was invented in MIT research that if you revise something in your mind, you can do it much quicker and much faster. Quicker means faster, but much faster. So for example, कैसे करना है? आपने नोट्स बनाए, क्वेश्चन सॉल्व करे, आप उसे पहले एक बार लिख लेंगे, अगले दिन उसे माइंड में याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू जस्ट डिड अ क्वेश्चन, अब आपको या तो 2 तरीके हैं, आप दोबारा उसको सॉल्व करोगे, डोंट सॉल्व इट, जस्ट थिंक इट इन द ब्रेन। अच्छा ये करा था, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट थी, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया था, इसलिए मैंने इस तरीके से सोचा था। एवरीथिंग हियर। तो इससे हुआ क्या, आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं, और आप चलते फिरते भी यू कैन डू दिस एक्टिविटी। इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, यू वुड बी एबल टू डू दिस। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस माइंड मैपिंग टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज व्हाट जनरली टॉपर्स डू। सो टॉपर्स बोलते हैं ना, यार हमको कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी, या फिर हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें रिवीजन करनी है। वो एक्चुअल में ये काम करते हैं। सो अगर आप ये काम करना शुरू कर दोगे, सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर ईटिंग समथिंग, आप खेल रहे हो, खाना खा रहे हो, तब भी आपका दिमाग काम कर रहा है। दैट इज माइंड मैपिंग। ओके, हाउ टू अप्रोच डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस? सो सी, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बड़े सारे हैं, एब्सोल्युटली राइट। एंड इनफैक्ट अगर हम सिर्फ जेई एडवांस की बात करें तो हमें प्रॉब्लम होती है, जेई मेंस में कुछ खास पूछा नहीं जाता है। JEE Advanced, yes, definitely there are a lot of different categories of questions, but मेरा अभी भी यही मानना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है,
एवरी क्वेश्चन इज इजी। वो ट्रिक जरूर डाल सकता है कि आपको डराने की कोशिश करेगा कि आपने कभी वैसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा होगा, बट हम लोग जनरली क्या सोचने में लग जाते हैं कि सर देयर विल बी अ शॉर्टकट, देयर विल बी अ शॉर्टकट। गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, देयर इज नो शॉर्टकट। ऑलराइट, people who are looking for mentorship program, please email us at info@mathongo.com. We'll revert to you. Okay. Advanced maths ML Khanna enough. ML Khanna is good, but you will still require some extra stuff to be done. People are asking now, class 11th is messed up. What to be done? एक तो बहुत सारे बच्चों का मानना ये होता है, और एक कि सर क्लास 11th खराब हो गई है तो मैं क्लास 12th कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे भैया, किसने कह दिया तुम्हें ये? इट्स ऑल मिथ। क्लास 11th के जो फॉर्मूले हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो यूज होते हैं क्लास 12th में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो नहीं आता होगा तो क्लास 12th सुधरेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है। यस, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैथमेटिकली बात करता हूँ, इफ यू हैव नॉट डन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू वेरी गुड लेवल, यू विल डेफिनेटली फाइंड सम प्रॉब्लम इन कैलकुलस आल्सो, क्योंकि कैलकुलस में क्वाड्रेटिक का बहुत यूज होता है। तो बट कैलकुलस में क्वाड्रेटिक के दो ही कंपोनेंट यूज होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट एंड व्हेन क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज नेगेटिव। वही कर लो ना पहले। फॉर पीपल हु आर एंटरिंग क्लास 12th, what should be the best strategy for you? The best strategy for you is, आप सबसे पहले अपना 12th सिक्योर कर लो, and your target should be to cover that 12th syllabus by October. अक्टूबर एंड तक खत्म करो, you will feel very relaxed यार, एटलीस्ट 12th तो प्रिपेयर्ड है। क्यों? अगर हम स्टेप बाय स्टेप सोच के चलते हैं, जेई मेंस में 60%, 55 से 60% वेटेज 12th की रहती है, और 12th से जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा स्कोरिंग भी ज्यादा होते हैं। हम बीच बीच में कभी कभी एक का दुक्का 11th का चैप्टर उठा सकते हैं 12th के साथ साथ, पर कब? when you are already going at a good pace in class 12th. बट अगर आप अभी कहते हो कि सर मेरी अभी समर ब्रेक्स चल रही है, तो मैं पहले सारा 11th करूंगा और फिर समर ब्रेक से बाद क्लास 12th शुरू करूंगा, प्लीज डोंट डू दैट। बिलीव मी, इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी टू डू। डोंट डू दैट। Okay, so just concentrate on class 12th. Those who are in class 12th, just concentrate. People who have just moved to class 11th, your target should be, don't take too much pressure, don't get too much nervous. नंबर नहीं आएंगे, घबराना नहीं है। 100% भी समझ में नहीं आएगा, घबराना नहीं है। Even if you are able to get 60 to 70% of wherever you are getting taught from, well done. Okay. Okay, sir, I scored 130 in mains without coaching along with 12th. Should I take a drop? I think you should. If you haven't taken coaching, I think 130 without a coaching is a very fabulous score. You should take a drop. And you should please take a complete drop. Do not go to any college and then side by side take a drop. As a dropper, what course on Mathon Go I can join? Please feel free to join. In fact, you can start with the calculus because you started calculus. If you are good at calculus, a lot of things will be easy for you, especially for the droppers, because calculus comes in handy in all the parts, algebra, coordinate geometry, and everything. RD Sharma, enough for preparation? RD Sharma is not enough for preparation. It is good to have a solid base. Mentorship program, I just told you guys, just write info@mathongo.com. We'll get back to you. Okay. Yes, so masterclass is sufficient for exam. A lot of students are asking. Yes, it is completely sufficient and completely different from what we are giving you on YouTube. Admission in college plus third attempt? No, just take admission to the college. No third attempt to IIT JEE. So don't worry if some people are saying the courses at some institutes will join late. Don't worry, you have still a lot of time. Just keep practicing. Okay, I'm just taking some time to read out your comments so that I can answer. A lot of them are coming simultaneously. Cengage books definitely are good for all the subjects, so you can just follow them. I have not included Cengage books in my books video, so that doesn't mean that those good books are not good. In fact, they are one of the best books in the market available at this point in time. Just keep them with you, keep doing them. I confess that I cannot cope up with advance. Should I drop fully this year? This depends completely on you. कि अगर आपको लगता है कि आप हार्ड वर्क कर पाओगे तो ही ड्रॉप करो.
otherwise not. Please go watch my video on drop, please. I request. बार बार वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है यार. सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ानी है हमें, ठीक है. How to deal with nervousness before exam? It's too important, please. So take as many. So बहुत सारे बच्चों को nervousness होती है एग्जाम से पहले. Very important point that you guys have raised. If you are having that kind of fear, just take as many exams as possible. मार्क्स हटा दो यार दिमाग से साला. हमारी जिंदगी मार्क्स ने झंड कर रखी है, right? So just take marks out of the picture. Believe me, if you start removing marks out of your picture, every test will be fantastic and your fear of taking tests will go away, right? There is too much in life to do. I honestly tell you. In fact, I am never very fond of IIT JEE coaching space because I feel IT is nothing, right? In terms of if I say what future value it will create, believe me, world is going at a very, very fast pace, right? And IIT, nothing helps. Your attitude, your desire to learn, and how much actually you can implement it is going to take you places, right? IT is definitely one of the very good steps in your first step or whatever you want to call a good step to your successful career, but it is not the end of it. So what you should start learning at this stage in time is what good qualities I should have, which is equal to a successful person. And if you pick out top shots, very good people whom can be your idol, they are not IITians, right? Not all of them are IITians. So just do not put too much pressure on you because world is changing at a much faster rate than you can actually imagine. हम लोग अभी भी IIT के एग्जाम को क्लियर करने की बात कर रहे हैं जबकि यूएस में एक 10 साल का 10वीं क्लास का बच्चा बैठा एप्स बनाता है and he is a millionaire. That's the change because they are working on something called good technologies, things which are required. We are still stuck with IITs of the world. Having said that, it is very important. So IITs का importance क्या है? Please उसको पकड़ो. They are trying. Why IIT preparation is important? They are trying to make you a better human, a better student, a better engineer. What is the definition of better engineer? Who thinks logically, who applies or execute logically, and is not afraid of putting 24 hours a day. Exactly, that is required. So imbibe those activities. Leave scores, everything apart. So a lot of students are asking what should be focusing on 11th or 12th. I think I have just asked, I told you everything. Okay, a good question. How to avoid silly errors? Last 5 minutes, guys. How to avoid silly errors? You cannot avoid silly errors. That is why they are called silly errors. So don't worry too much about silly errors. See to it whether in the name of silly errors you are doing conceptual errors. बहुत बार हमें क्या होता है बच्चों को लगता है कि सर ये सिली एरर हो गया बट वो एक्चुअल में कंसेप्चुअल एरर था, वो चेक करो, ठीक है? अदरवाइज सिली एरर्स की डोंट वरी टू मच. एक तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बात करते हैं कि सर मुझे इस कॉलेज जाना है उस कॉलेज जाना है. आई प्लीज रिक्वेस्ट यू डोंट डू दिस अगेन. जस्ट फोकस ऑन योर डेली इंप्रूवमेंट्स. कॉलेज कम्स वे आफ्टर, राइट? पहले आती है पढ़ाई, उसके बाद आती है अच्छे तरीके से पढ़ाई, उसके बाद आती है उससे और अच्छे तरीके से पढ़ाई, उसके बाद आती है फोकस पढ़ाई, फिर कहीं बहुत 100 लेवल पे बात जाने के बाद स्कोर, और उसके बाद आता है कॉलेज. सो कीप दैट फोकस. Weekly tests will help me in improving my marks. Being a dropper, definitely it should, right? If you are a dropper, so test should be your part of the day. Somebody asked that will we be opening Marathon Go test series? Yes, we will be opening the test series in the month of July, right? And we are trying to add more. So we we gave you 100 tests. Now we are trying that we should give you more than 100 so that you can practice well. So somebody is asking, sir, should I study all 3 subjects in one day? You should not. So if you are going to some coaching in the morning or you're going to school in the morning and are returning back, you would not have time to cover all the 3 subjects. What should be the criteria? 2 घंटे से पहले कोई सब्जेक्ट बदलना नहीं है. So I've seen a lot of students, what they do is पढ़ा आधा घंटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ तक पहुंच गया, अरे सर हो नहीं रहा, क्या करें? अरे भाई कुछ नहीं करना है, 2 घंटे वही टॉपिक पढ़ना है. जब तक
सर दर्द नहीं होगा तो सर की दिमाग की विकसित नहीं होगी। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो भाई इसको यूटिलाइज करो। हम लोग इसको खर्च ही नहीं करना चाहते हैं, राइट? खर्च करो, खर्च करने से बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ओके। some very important thing, some YouTube channels are promoting intelligent guessing should be apply that। भैया इंटेलिजेंट जो गेसिंग होता है अच्छी चीज है, हम मना नहीं करते, बट वो होता कब है? 10 दिन पहले, 1 महीना पहले। अभी अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग करने वाले हो, बिलीव मी, आई कैन बेट इट ऑन एनी गिवन डे, तुम्हारी 30,000 या 50,000 से ऊपर रैंक नहीं आने वाली। सो प्लीज डोंट डू दैट एक्टिविटी, दैट्स बुलशिट। ठीक है, वो मत करो। अगर मैं भी रिकमेंड करता हूँ, अगर तुमने मेरा शॉर्टकट वाला वीडियो देखा हो, मैंने बहुत घबराते हुए बनाया है, क्योंकि वो डिमांड थी, तुम बच्चे मांग रहे थे। बट मैं कभी भी शॉर्टकट को प्रमोट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है शॉर्टकट से नंबर नहीं बनने वाले हैं। वो सिर्फ होता है ना फील गुड फैक्टर, जैसे आजकल बड़ा कुछ चला हुआ है, नथिंग अगेंस्ट, बट मोदी वेव कि भैया बस खुश कर दिया। तो आई एम माई सेल्फ वेरी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बीजेपी एंटी हूँ, एंड वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट, बट मोदी वेव कहते हैं ना कि भाई फील गुड फैक्टर, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो वाली चीज है। सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप, डोंट फॉल इनटू एनीथिंग व्हिच मेक्स यू गुड and gives you immediate result, because there is nothing called immediate results. So if something gives you immediate result, in fact you should worry about that, because that is something which is not going for a longer phase of time. Okay, so fee for AITS, we are definitely not going to charge much. We think we will be just charging something around 1200 to 1500 for the entire year, for I guess around 125 tests. That's what we are targeting. पीपल आर आस्किंग ड्रॉप लेके आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। यार तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? हम बाबा लोग तो हैं नहीं। अगर तुम ही नहीं बता सकते तो यार फिर मैं कैसे बता सकता हूँ? दिस इज योर कॉल, दिस इज, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल कि अगर मेरे को जाना है यहाँ तो मैं पढ़ के दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। कैन आई डू टारगेट एट होम? You can do studies at home, but sometimes you do not get structure. So for structure, you have to go to some structured, organized course, right? Should we focus on Sunday test or running syllabus? So running syllabus is a bad word. You should never run a syllabus. हमें कोई जल्दी नहीं है, टाइम बहुत है। और अगर मैं कहता हूं कि आप कहते हो कि सर मुझे 10 चैप्टर कवर करने हैं, पर मेरा शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं 9 ही चैप्टर बड़े ढंग से कर पाऊंगा, I would say just do those 9 chapters. Don't run through all those 10 chapters. Do take Sunday test. हर संडे नहीं दे पा रहे तो alternate संडे दो। As simple as that, right? बहुत सिंपल चीजें होती। Okay, people are saying for foundation, so we are not getting honestly time to prepare something for foundation. But yes, if we do get some time, we'll definitely try that. Okay. Will mains 2019 be conducted by CBSE? Completely irrelevant. Whosoever conducts it, it does not matter. Easy, tough, doesn't matter. It's competitive. If it is tough, it is tough for everyone. If it is easy, it is easy for everyone. All right. Okay. AITS, all subjects will be included completely. So will you make videos on JEE Advanced series? We are already making. So just go and see our master classes. They are. So एक और बात मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. Just before we end now, we are already up with the time. I am not trying to make you clear IIT, or even I am not teaching you to clear IIT JEE. That is why हम लोग कभी भी बहुत जल्दी फिजिक्स या केमिस्ट्री पे नहीं जा रहे अपने प्लेटफॉर्म पे. क्यों? I believe you should first of all start enjoying what you are studying, right? आप सीखो तो सही जो आप पढ़ रहे हो. वो अगर आप ढंग से सीख गए, तो हमने मास्टर क्लासेस बहुत सोच समझ के कॉन्सेप्ट लॉन्च करा कि यार अगर आप एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक के मास्टर हो, तो आप शायद वो कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में लगा पाओगे. अब चाहे वो आईआईटी हो, राइट? आप उसको आईएएसटी में लगाओ, आप उसको फॉरेन जाने का जो एग्जाम होता है सैट में लगाओ. यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर. दैट इज व्हाट यू शुड थिंक. Please change your thinking mindset. IIT. Please concentrate on mastering a subject, mastering a topic. Before moving to next, I have to master this first. And this should be for all the 3 subjects. Rest everything will fall in place.
Okay. Okay. Guys, you guys, somebody is asking my blessings. Believe me, whatever I have done, my blessings are always with you. And in fact, I'm trying to change the vision of you guys. Right? Think big. IIT is just the start of it, not the end of it. Just start thinking big about yourself. Marks just give you an indication that you might be doing something wrong. You might be doing something wrong, but you are not wrong, right? हमें बहुत बार लग जाता है कि यार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारे बस की नहीं है. मार्क्स का मतलब वो नहीं होता. मार्क्स का मतलब बताना क्या होता है, आप या तो कुछ गलत तरीके से पढ़ रहे हो या गलत पढ़ाई कर रहे हो, उसे इम्प्रूव करोगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. प्लीज जस्ट stick to it. All right, guys. So last 2-3 questions, and we'll definitely try to be regular with Padhai Pe Charcha on every Sunday or every alternate Sunday. Okay. Should I do improvement exams with me? So this is one of very good queries that come in. Uh, yes, you do have to register for a mentorship program. A lot of students are asking. Please write us a mail on info@mathongo.com. So coming to the this improvement point, improvement was required too much when there was a criteria that आपको इतने percent marks लाने हैं to be qualified for JEE means. अब वो criteria नहीं रहा है. पिछले साल तक था, इस साल वो criteria हटा दिया गया. So if you have for example 80% marks, you do not require to take improvement. But if you have somewhere 65% marks, I would still say improvement is not a bad deal at all, because your board marks are going to help you in the long run, even in the future. For example, when you write MBA exams, you want to go abroad, तो scholarship में आपके सारे marks देखे जाएंगे. Okay? RS Agarwal is good for board exams. I believe RD Sharma is better. So which is better, online coaching, offline coaching? I would say a mix of both is better. Offline gives you structure, online gives you personalization. So that's the answer. If you start preparing from now onwards, will you be able to crack JEE? Sangeeta is asking. Sangeeta, you should tell me this rather than I am telling you. Take it on ego. मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, तुम कर सकती हो. सबको चैलेंज देता हूं, जितने भी तुम लोग बैठे हो, कर सकते हो तो करके दिखाओ इस साल. दैट इज व्हाट आई कैन से यू. टेक इट एज अ चैलेंज. ईगो पे ले आओ अपनी, यार मेरे को तो करके दिखाना है. साला कौन बोलता है जो नहीं होगा मुझसे. रिकॉर्डेड people. So let's cut it off. We have been talking for a long time now. We'll come back maybe this Sunday or the next Sunday. Okay. So keep working hard. Start believing in yourself. For any queries, feel free to answer in this comment section below, or maybe you can join maybe, or you can write us at info@mathongo.com. You can feel free to write. People who want to have some special learning or structured courses, master classes are there. Please, I request, यार पैसे के ऊपर बहस मत करना. पसंद है तो ज्वाइन करो, नहीं पसंद है तो मत करो. Completely honest answer, right? Mentorship program, please write to us on info@mathongo.com for mentorship. If you still are interested in the AITS, we are going to launch AITS in the month of July, so don't worry about it, and we are not going to charge too much for it. Maybe we are just planning 125 test for something around 1500 rupees. That's it. So you can write us everything on the email or on the comment section below. All right. And I'll see you next Sunday with some more motivation and more enthusiasm from you guys. All right, guys. Best of luck. God bless you all. Keep working hard, and you can do it. There is no one in the world who can beat you. There is nothing which can stop you. You are your best version. So make yourself your best version. Do not compare yourself with anyone else. Right? You are yourself best. Okay? You have some hidden talent, so don't worry about it. It will definitely show it someday or the other. You just have to trust yourself. All right, guys. God bless. See you next Sunday.